Hello all. I welcome you all on behalf of Vidigya, your best pal for CLAT preparations. So today our topic for the discussion is Armenia-Azerbaijan conflict. So it was recently in news and it is about a particular region, mountainous region which is 4,400 square kilometer. So through this session, through this PPT, we will just have a look at what's the issue, what are the countries or which are the countries that are involved in this, and how the role of CSTO as well as CSTO means Collective Security Treaty Organization and NATO, that is Atlantic Treaty Organization, has played their role in this particular conflict. Okay, and which is followed by a quiz of 5 questions as well. So without any further ado, we are ready to begin. So a quote that is success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts. So by Winston S. Churchill. So with this positive note, I think we are ready to begin. So let's start. So this particular issue is about a region, as I had already told you, the name of the that particular region is Nagorno-Karabakh. Yes, Nagorno-Karabakh region, which is internationally recognized as a part of Azerbaijan, but the majority of the population in that area is ethnic Armenians. Okay, so with this particular map, we can see in the middle, you can see the disputed region between Armenia and Azerbaijan, that is Nagorno-Karabakh, and in the left hand side we can see Armenia, and on the right hand side we can see Azerbaijan, which is followed by the neighboring countries of both these nations. That is, we can see Georgia in the map, Russia, Turkey, Iran as well. Okay, so as I'd already told you, there's role of CSTO, that is Collective Security Treaty Organization, as well as NATO, that is North Atlantic Treaty Organization, in this particular scenario. So CSTO, what CSTO has done, if we had look at the post, because this is not a recent issue. This particular issue had started, when Armenia and Azerbaijan were part of the Soviet Union. Okay, so this particular issue started in the year 1988, and which is going on still right now. Okay, so in and after the post disintegration of Soviet Union in the year 1991, then again the stalemate had begun between Armenia and Azerbaijan regarding this particular region, and then Russia had mediated in this particular conflict, and Russia had tried to put a ceasefire agreement in the year 1994. So how CSTO has come into the picture? The reason is because earlier Armenia and Azerbaijan both countries, both post-Soviet nations were part of CSTO, that is Collective Security Treaty Organization. Later Azerbaijan left it, and in this particular issue we can see that Russia is being favored by, or we can say in this particular issue Armenia is being favored by Russia. Okay, अर्मेनिया को रशिया सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर इशू में, और इन द सेम वे अजरबैजान इज बीन सपोर्टेड बाय टर्की. ओके, विच इज एन अलाई ऑफ नाटो, मतलब विच इज ए नाटो मेंबर एज वेल. ओके, सो दोनों चीज आ गई यहाँ पे. सीएसटीओ क्यों? बिकॉज रशिया कहीं ना कहीं उसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है सीएसटीओ के अंदर, और सीएसटीओ में अर्मेनिया अभी तक भी है. मींस इट इज अ पार्ट ऑफ द 6 कंट्रीज विच आर देयर इन सीएसटीओ. और नाटो बिकॉज टर्की इज हेल्पिंग Azerbaijan in this, which is an ally in NATO, or which is a member country of NATO. So first of all, we'll just have a look at what is CSTO, that is Collective Security Treaty Organization. So CSTO, as I had already told you, that is Collective Security Treaty Organization. It is an intergovernmental military alliance that was signed on 15th of May 1992. कब साइन किया गया? 15th of May 1992 को. Means after the disintegration of Soviet Union in the year 1991, in the year 1992, 6 post-Soviet Union nations, that is Russia, Armenia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. These 6 nations have signed an agreement, and they have collectively joined CST, that is Collective Security Treaty. Okay, which is also known as Tashkent Pact or Tashkent Treaty as well. Okay, after that, in the year 1993, because this particular treaty was started in 1992, then in 1993 what has happened? 3 more nations, that is Azerbaijan, which is currently in news as well. Other than that, Belarus and Georgia have joined this particular treaty. Okay, and finally the treaty was took into effect in 1994.
So if I would just like to sum it up. 1992 में it started by 6 countries. फिर 1993 में 3 more countries joined, and finally 94 में there were total 9 countries. That is additionally 3 more countries, that is Belarus, Georgia, and Azerbaijan had joined this particular treaty or organization. But after 5 years, that is in the year 1999, only 6 countries were there. That is the remaining 3 countries, because earlier 9 countries were part of CSTO. Then 3 countries had left. That is, first is Azerbaijan has left, Uzbekistan has left, and Georgia. These 3 countries had left, and after that 6 countries were there, and they had started that it will be an intermilitary, intermilitary CSTO as an intermilitary alliance in the year 2002. क्या हुआ 2000 1992 में 3 countries had backed out, and after that 2002, in the year 2002, these 6 countries had thought that yes, we'll make this CSTO as a inter-military alliance. Okay, I hope we have got a good overview about CSTO. Now we'll have a look at the Azerbaijan side, which is being supported by Turkey and which is a member of NATO as well. So first of all, we'll have a look at NATO. NATO क्या होता है? It is basically North Atlantic Treaty Organization, that is the full form, and it's it started from Treaty of Brussels, which was signed on 17th of March 1948, which comprises of 5 countries, that is Belgium, Netherlands, France, Luxembourg, and United Kingdom. Because क्या हो गया था? What had happened? वर्ल्ड वॉर सेकंड जब समाप्त हुई थी, दैट इज इन द ईयर 1945, इन ऑर्डर टू सेव द पर्टिकुलर यूरोपियन नेशंस फ्रॉम सोवियत, दैट इज पर्टिकुलरली रशिया, तो कहीं ना कहीं दीज कंट्रीज वांटेड कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन हो विच विच इज वेरी हेल्पफुल, एंड कहीं ना कहीं वो एक तरह से कहीं भी एक तरह की प्रॉब्लम आए, मिलिट्री प्रॉब्लम या कहीं नहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. तो इन 5 कंट्रीज ने थ्रू ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स क्या किया, एक ट्रीटी साइन करी, और उसमें 5 देश इसमें इन्वॉल्व थे जो अपन ने देखे, दैट इज बेल्जियम, नेदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड यूनाइटेड किंगडम. बट दे वर ऑफ द ओपिनियन and they thought ki this treaty, we need someone who is very powerful and someone who can counter Russia or who can fight with Russia. So without USA it was not possible. So on 3rd April 1949, that is around 12 to 13 months after signing the Treaty of Brussels, they have taken United States into the NATO as well. Okay. So that's what has been written. American participation was thought necessary in order to counter the military power of the Soviet Union, and therefore talks for a new military alliance began almost immediately. These talks resulted in the North Atlantic Treaty, also called as Washington Treaty. This is very, very important. Also called as Washington Treaty, which was signed in Washington DC on not 3rd of April, 4th of April 1949. 3 years later, more countries had joined. Western Germany also joined, Greece, Turkey. Right now, there are 30 countries in NATO. And if I talk about CSTO, Collective Security Treaty Organization, 6 nations are there. Then talking about Article 5, क्या होता है? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इफ आई एम ए मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर नाटो, राइट, 30 देशों का जो समूह है, अगर मैं उसका मेंबर हूं और मेरे ऊपर अगर किसी एक देश के ऊपर अटैक होता है, फॉर एग्जांपल ग्रीस के ऊपर या जर्मनी के ऊपर या यूनाइटेड किंगडम, किसी भी देश के ऊपर आक्रमण होता है, सो दिस इज मतलब वी कैन से कि वो किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं, सभी के ऊपर आक्रमण हुआ, वो ऐसा माना जाता है. तो द सेम थिंग हैज बीन रिटन हियर. इफ वन मेंबर ऑफ द अलायंस इज बीइंग अटैक्ड इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इट इज टू बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल मेंबर्स. तो कहीं ना कहीं किसी एक देश पर अगर आपदा आती है तो कहीं ना कहीं दूसरे सारे देश क्या होते हैं, उसमें सपोर्ट में आ जाते हैं उन देशों के. सो टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या होता है कि जब भी किसी एक देश के ऊपर आपदा आती है तो सभी देश मिलकर उस आपदा का कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालते हैं कि अब इसके ऊपर क्या करना चाहिए. तो आर्टिकल 5 को आज तक कभी रिवोक नहीं किया, केवल एक ही बार हुआ जब 9/11 का WTC, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, ओके, बाय अलकायदा. उसके नेक्स्ट डे आर्टिकल 5 को रिवोक किया था. और आर्टिकल 5 is there in NATO, but if I talk about CSTO, so CSTO में the same thing is there, but under Article 4. I hope the things are getting clear. At present, NATO has 30 members, 12 founding members. So अलग-अलग मतलब in years to come, मतलब it started in 1948, then America joined on 4th of April 1949. So वैसे चलता रहा और धीरे-धीरे कुछ-कुछ देश जुड़ते गए, और अभी at present बात करते तो कहाँ NATO has 30 members, overall 30 members. और रिसेंटली जो लास्ट नेशन है, अगर अपन बोलेंगे 30th मेंबर जो था, दैट इज
रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया, उसने ज्वाइन करा था नाटो का 30th मेंबर ऑन 27 मार्च 2020। ओके, अब नाटो क्या बोलता है, नाटो की पूरा ओवरव्यू, कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन से देश थे वो अपन ने समझा। नाउ द थिंग इज, नाटो क्या रिकमेंड करता है, इट रिकमेंड्स नेशनल डिफेंस बजट ऑफ मेंबर कंट्री शुड स्टैंड एट 2% ऑफ जीडीपी। मतलब आपकी ओवरऑल जीडीपी का डिफेंस बजट कितना होना चाहिए, 2% होना चाहिए। बट आउट ऑफ 30 कंट्रीज ओनली 7 कंट्रीज आर एबल टू कंप्लाई विद दिस गाइडलाइन, कि उनका जो बजट है, डिफेंस बजट हैज टू बी मोर देन 2% ऑफ देयर जीडीपी। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ब्रुसेल्स, दैट इज इन बेल्जियम, जहां से वो स्टार्ट हुआ था, ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स इन द ईयर 1948। एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नाटो। क्लियर? Now we'll have a look at Nagorno-Karabakh, because issue is between Armenia and Azerbaijan, and the disputed region is 4,400 square kilometer Nagorno-Karabakh region, which is uh, uh, which is internationally being recognized by or we can say internationally being recognized by Azerbaijan, but the majority of population that lives there is Armenians. और ये story had, this particular story had started in the year 1988. Then काफी मतलब if I talk about 1988 to 1994, इन 6 सालों में लगभग 1 मिलियन पीपल वर गॉट डिस्प्लेस्ड, मतलब कहीं ना कहीं किसी को पलायन करना पड़ा, किसी को जगह छोड़नी पड़ी। एंड ओवरऑल कहा जाता है कि अराउंड 30,000 पीपल वर किल्ड regarding the conflict which arise between both these countries, that is Armenia and Azerbaijan. So regarding Nagorno-Karabakh, it is also known as Republic of Artsakh by Armenians, and it is a mountainous region of 4,400 square kilometer, that I had already told you. Traditionally inhabited by Christian Armenians and Muslim Turks. This is important. It was traditionally inhabited by क्रिश्चियन अर्मेनियंस एंड मुस्लिम टर्क्स। कौन कौन रहते थे? क्रिश्चियन की आबादी भी रहती थी और मुस्लिम्स की। और अभी देखा जाए तो अर्मेनिया जो देश है, वहां पर जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज मोर क्रिश्चियन। ओके, और अगर अजरबैजान की मैं बात करता हूं तो वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, वी कैन से मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम। इन सोवियत टाइम इट बिकेम एन ऑटोनोमस रीजन विद द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। और जैसा कि अभी भी इंटरनेशनली अगर अपन देखें तो नगोर्नो काराबाग इज ए रीजन ऑफ or forms part of the region of Azerbaijan only, not Armenia. Okay, regarding the killing that I already told you, 1988 से 94, 1 million people got displaced, और कहीं ना कहीं because there was a situation of like war-like situation there. Okay, and around 30,000 people were killed. Russia has military bases in Armenia. Armenia is part of Russia-led CSTO. जैसा अपन ने that's why we had taken CSTO and NATO in the beginning, because कहीं ना कहीं now we have got an overview कि CSTO का part कौन है? अर्मेनिया है। अजरबैजान पहले था, but in the year 1999 they left, and then in the year 2002 it became an inter-military alliance. But NATO का अजरबैजान मेंबर नहीं है, but इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में टर्की इज सपोर्टिंग अजरबैजान। ओके, सो कहीं ना कहीं, और टर्की इज ए मेंबर ऑफ नाटो, सो दैट्स वाई सीएसटी और नाटो के बारे में अपन ने इसके बारे में जानकारी ले ली थी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अभी रिसेंटली क्यों इशू अराइज हुआ? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट अगेन स्टार्टेड ऑन 27 ऑफ सितंबर 2020। लाइक दोनों साइड से जो मतलब मिलिट्री, दोनों साइड की जो मिलिट्री दोनों कंट्रीज की, वो कहीं ना कहीं अगेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, दैट इज नगोर्नो काराबाग। ओके, एंड देन Russia, the same country which had mediated, which is founding member we can say of CSTO as well, उसने mediate किया इसमें। और 10th of October, around 2 weeks after the war which had begun on 27th of September 2020, 10 अक्टूबर 2020 को, that is 10th of October 2020 को क्या हुआ? वहां पर ये वॉर खत्म हुई है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक अग्रीमेंट करा दिया कि जो जहां पे है वो वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं अजरबैजान ने कुछ एरिया ऑक्यूपाई भी कर लिया था, ऑलरेडी उन्हीं का एरिया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि काफी समय से कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है तो वो थोड़े से आगे आ गए थे, तो वहां पर रशिया ने ऐसा बोल दिया जो जहां पर है वो वहीं रहेगा, और खुद के रशिया ने खुद के ट्रुप्स वहां पे लगा दिए ताकि और किसी भी तरह का और कैजुअलिटी या किसी भी तरह की और वॉर लाइक सिचुएशन ना हो। ये एरिया इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? बिकॉज पाइपलाइन शिपिंग कैस्पियन ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम अजरबैजान टू द वर्ल्ड पास क्लोज टू नगोर्नो काराबाख। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रीजन होल्ड्स इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस। ओके, the conflict is decades old, and the region largely populated by ethnic Armenians. मतलब ज्यादातर जो population है जो वहां रहती है नगोर्नो काराबाख में is ethnic Armenians, but internationally it is being recognized as a territory or a part of Azerbaijan.
अंडर द सोवियत यूनियन, अगर बिफोर 1991 की बात करते हैं अपन, जोसेफ स्टालिन डिसाइडेड टू मेक द नगोर्नो काराबाख रीजन एज एन ऑटोनोमस ओब्लास्ट ऑफ सोवियत अजरबैजान. ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट नगोर्नो काराबाख को ऑटोनोमस, एक इंडिपेंडेंट रीजन कह दिया जाए या बता दिया जाए ऑफ अजरबैजान. ठीक है, आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव गॉट अ गुड ओवरव्यू. क्या इशू है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें मीडिएट कर रही है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इवन इस पर्टिकुलर एरिया की इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है, बिकॉज कैस्पियन ऑयल वगैरह नेचुरल गैस का पूरा वहां से पाइपलाइन वगैरह जाता है. आगे बढ़ते, एक लास्ट पॉइंट है कि अभी 2020 में हुआ, इसके पहले 2016 में एक सीज फायर हुआ था कहीं ना कहीं उनके बीच में वापस से कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया इट स्टार्टेड इन द ईयर 1988 और वो अभी तक चल रहा है इशू ऑफ नागोर्नो काराबाख. तो 2016 में भी हुआ, वहां पर 4 डे वॉर हुई थी, अप्रैल वॉर जिसको अपन कहते हैं. तो इट स्टार्टेड ऑन 2nd of April और इट एंडेड ऑन 5th of April, दैट इज 4 days, 2nd, 3rd, 4th and 5th April. एंड in that particular incident in the year 2016 रशिया हैड मीडिएटेड और कहीं ना कहीं रशिया ने इस पूरे इशू को सॉर्ट आउट कराया था. तब भी hostilities continued until 5th of April when both sides announced a ceasefire on 5th of April. As a result of 4 day war, Azerbaijan retook 2 strategic hills, a village and a total of about 2000 hectares of land which were occupied by Armenia during the war. जो पहले अर्मेनिया का पार्ट हुआ करता था कहीं ना कहीं अजरबैजान, और जब वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो आगे आ गए और 2016 में भी उन्होंने कुछ एरिया वहां का अजरबैजान ने एक्वायर कर लिया. Clear है. I think with this we have got a very good overview of this particular topic, and this is also one of the international topic which is important as far as CLAT perspective is concerned. So now we'll move at the question section, that is the quiz. So it's quiz time. Question number 1. Which of the following country got significant gain as a result of recent military conflict? So जैसा कि मैंने बताया पूरा जो आसपास का एरिया है अर्मेनिया का है, पूरा नगोर्नो काराबाख, बट अजरबैजान भी वहां पे आया और आगे आया तो रशिया हैज मीडिएटेड, रशिया हैज सेड कि जो जहां पे वहां रुक जाएंगे और खुद के ट्रुप्स लगाए. तो कहीं ना कहीं वी कैन से अजरबैजान इज द वन हु हैज गॉट हेल्प्ड बाय दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट. तो अजरबैजान इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statement is incorrect? So please note the question is asking about the incorrect option. First, Nagorno-Karabakh is internationally recognized as part of Armenia. Second, another ceasefire between Armenia and Azerbaijan was brokered by Russia in 1994. Separatist Armenian Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast as a Republic of Artsakh. So which of the following statement is incorrect? The incorrect statement is option number A, because Nagorno-Karabakh is internationally recognized as part of Azerbaijan, not Armenia. Okay, now we'll move to question number 3. 2018 Armenian Revolution is also known as, this particular thing we had not studied earlier. The correct answer is Velvet Revolution. What had happened in Armenia, in order to remove the existing government, जो वहां पर सरकार थी उसका तख्ता पलट या उनको हटाने के लिए एक पर्टिकुलर जो वहां के अपोजिशन लीडर थे उन्होंने ये पूरा एक रिवॉल्यूशन चलाया था जिसको इन द ईयर 2018, तो उसको क्या कहा जाता है, वेलवेट रिवॉल्यूशन. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statement is incorrect regarding Nagorno-Karabakh? Nagorno-Karabakh is traditionally inhabited by Muslim Turks. B. In Soviet times, it became an autonomous region within the Republic of Azerbaijan. C. Internationally recognized as part of Azerbaijan, but the majority of the population is ethnic Armenian. And D. 4-day ceasefire between Armenia and Azerbaijan took place in the year 2016. So the question is asking for the incorrect one. First option is incorrect because it is partially correct. Nagorno-Karabakh is traditionally inhabited by Christian Armenians and Muslim Turks. So that's why this option is incorrect. All the options remaining, that is option B, C, and D, are correct. So now we move to the last question, that is question number 5. NATO, that is North Atlantic Treaty Organization, has only once revoked Article 5 in a year. I already told you this particular article कब होता है, कब, दैट इज आर्टिकल 4 CSTO में होता है, आर्टिकल 5 नाटो में होता है. ये कब आता है, जब किसी देश के ऊपर कोई विपदा आ जाती है तो कहीं ना कहीं जब उनको जरूरत रहती है कि सभी मेंबर एक ही उनको सपोर्ट करे कहीं ना कहीं, और वो अटैक एक देश पे नहीं सभी देश पे अटैक हुआ है, तो आर्टिकल 5 को रिवोक किया, एक ही बार किया गया. दैट इज 9/11 का जो अटैक हुआ था 11th of September 2001 को यूएस में, उसके नेक्स्ट डे दैट इज 12th of September. तो इन द ईयर 2001 इज द करेक्ट आंसर.
So with this, I think we are good to go. We have got a very good overview of this particular topic, and this topic holds importance and relevance as far as CLAT is concerned. Okay. So with this, a quote that is, the ladder of success is best climbed by stepping on the rungs of opportunity. Yes, the ladder of success is best climbed by stepping on the rungs of opportunity. So with this, I think we are good to go. Be positive, stay logical, stay ahead with Vidya, your best pal for CLAT preparations. And to get this content and more stuff with related to CLAT and other law entrance exam, you can visit the URL which has been mentioned in the description section. And you can also join the Telegram channel of ours as well. So that's all from my side. Thanks for watching.